हाय, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेड इजी, जिसमें हम मैथ्स को इजी बनाते हैं। टुडे वी विल सी कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। द थ्योरम इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। थ्योरम समझने के लिए यहाँ पर हमने फिगर बना कर दी है, इन विच देयर इज अ सर्कल with center M and line L is perpendicular to radius MN at point N. Therefore, given is M is the center of a circle, MN is radius and line L is perpendicular to radius MN at N. And प्रूव हमें करना है लाइन L इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट N. लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. इट मीन्स देयर शुड बी ओनली वन पॉइंट N कॉमन इन सर्कल एंड L. So to prove we will take any other point P on line L and will prove that P is not point on circle. Proof: take any point P other than N on the line L and draw segment MP. So यहाँ पर हम MP ड्रॉ कर लेते हैं. Here in triangle MNP, angle N is right angle. Therefore, it is a right angle triangle, and MP is hypotenuse of the triangle, and we know hypotenuse in right angle triangle is the largest side of a triangle. Therefore, segment MP is greater than MN. So, point P is in exterior of circle. Now, in triangle MNP, angle N is a right angle. Therefore, segment MP is greater than segment MN. But MN is radius. MN is radius. MP is greater than MN. Therefore, P lies in exterior and it can't be on circle. It means there is no any other point than N common in circle and line L. No other point except point N on line L is on the circle. Therefore, line L intersects the circle only one point N. Line L intersects circle only at one point N, and therefore line L is a tangent to the circle.